For Rationale Company, the directors of Rationale Company are reviewing the published financial statements of the group, which include performance measures such as underlying profit. This information is additional to what is required by the IFRS standards. Okay. Discuss the reasons why an entity may wish to disclose additional performance information in its financial statements and concerns it may raise. The reasons why an entity may wish to नहीं, but the reasons that I identified over the years that why an entity may wish to disclose additional performance measure in information is that in certain scenarios that entity might want to cover their poor performance with the help of additional performance measures, such as if a company has incurred a loss in the current year, then a company might calculate the underlying profit or might provide them certain asset ratios that might divert the attention of the investors towards the fact that entity has performed better than than what they have actually recorded in the financial measures or the basic financial measures or performance measures. So the concerns that this additional performance measures may rise is that this might lead to clutter in the financial statements or in the uh, in the disclosures. That is the finance that the investors might not cover the points that are actually relevant or are actually important in the discussion, uh, in the interpretation of the financial measures, but would rather focus their attention on the additional performance information which is provided by the entity. Next, क्या हो सकता है? Additional performance measures are based on the judgment of the management. That is what the management would like to showcase to the investors, and is usually been seen that the additional performance measures are usually positive in nature and are presented to the investors in order for the reputation building. Uh, an entity might not disclose the negative additional performance measures of the financial statements to the investors. If an entity has reported additional performance measures in the current year, then it would be an unsaid rule for the entity to present these additional performance measures in the upcoming years as well. And the performance of the upcoming years is uncertain, and thus this might raise concerns or might raise questions to the entity from the investors that why aren't the additional performance measures which were presented last year not present in the current year. उसके बाद और क्या बोल सकते हैं? क्लटर, हिस्टोरिक नहीं, हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं कि measures are already historic in nature and less relevance is posted to the performance measures itself. और क्या बोल सकते हैं? आई थिंक इतना काफी है फॉर 5 marks टू बी ऑनेस्ट. Rationale. IFRS requires an entity to disclose additional information which is relevant to an understanding of the entity's financial position and financial performance. A company may disclose additional information where it is felt that entity's performance may not be apparent from the accounts prepared under IFRS. A single standard set of accounting practices can never be sufficient information to understand an entity's position or performance. Additional information can help the users understand management's view of what is important to the entity and the nature of the management's decision. तो पहले तो इन्होंने रीजन बता दिया कि क्यों दिए जाते हैं, बाद में इन्होंने सारे सारे प्रॉब्लम्स बताए. There are concerns relating to the disclosure of additional information. There is no specific guidance on information which is not required by IFRS being disclosed in the financial statements. Such information may not readily be derived or reconciled back to the financial statements. There is also difficulty comparing information across periods and between entities because of the lack of standardized approach.
Also, presentation of additional information may be inconsistent with the defined or specified in IFRS, and the entity may present excessive optimistic picture in an entity's financial performance. So, excessive optimistic in picture में क्लटर का भी कभी पॉइंट कवर हो जाता है, और वो पॉजिटिव पिक्चर का भी कभी कभी पॉइंट क्लियर हो जाता है, जो अपन ने बोला था. Non-IFRS information may make it difficult to identify and complete set of financial statements. अच्छा, अपन ये भी बोल सकते थे कि कंपेरेबिलिटी से कुछ होता नहीं है, लाइक द फाइनेंशियल द एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड और वुड लीड टू लैक ऑफ कंपैरिजन बिटवीन एंटिटीज. क्योंकि जरूरी नहीं है कि वन एडिशनल मेजर विच हैज बीन गिवन बाय वन एंटिटी वुड बी गिवन बाय द अदर एंटिटी, तो इसलिए कंपैरिजन हो नहीं सकता. Additionally, the information may be given undue prominence or credibility mere because of its location in the financial statements, कि उसको वैसे भी उसको क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती, तो और एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्यों ही मिलेगी जब जब नॉर्मल डिस्क्लोजर्स को उतनी नहीं मिलती. ऐसा non-IFRS financial information should be clearly labeled in a way that distinguishes it from the corresponding IFRS financial information. Any term used to describe the information should be appropriate having regard to the nature of the information. The term or label should not cause confusion within IFRS information and should accurately describe the measure. आगे आगे बढ़ते हैं. Discuss the use and limitations of the proposed calculation of underlying profit by Rationale Company. Your answer should include comparative calculation of underlying profit for the years ended 31st of December 15 and 16. तो यूज और लिमिटेशंस में तो हम यही सारे पॉइंट्स ऊपर से नीचे उठा के डाल सकते हैं कि इन सर्टेन केसेस कंपनी माइट वांट टू पिक्चराइज अ पॉजिटिव इमेज और वो सब. यूज में यूज के बाद में आते पहले अपन ये कैलकुलेशन कर लेते हैं. देखो, अंडरलाइन प्रॉफिट सबसे पहले तो होता क्या है. द डायरेक्टर यूज द अंडरलाइन प्रॉफिट टू कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. अंडरलाइन प्रॉफिट is a measure normally based on earnings before interest, tax, depreciation and amortization. तो बिफोर ऑल ऑफ दिस शिट हमको सारी चीजें बस इसमें ऐड करनी है. सो ये देखो, नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्सेशन आफ्टर द आइटम सेट आउट बिलो, मतलब ये सारे आइटम इसमें से माइनस किए गए होंगे तब जाके ये -5 और 38 बना है. तो अभी अपने को क्या करना है, इस -8 और इसको खाली अपने को ऐड बैक करना है. जस्ट ऐड बैक 2016, 2015, -5, 38. ये मुझे एक और पॉइंट आया है कि द अंडरलाइंग प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा आएगा. देखना 15 में ना अंडरलाइंग प्रॉफिट ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू 2016. तो वो भी बोल सकते हैं कि द अंडरलाइंग प्रॉफिट इन द ईयर 2015 इज स्टिल हायर देन द अंडरलाइंग प्रॉफिट विच हैज बीन अर्नड इन 2016. ऐसा भी बोल सकते हैं. तो अभी अपने को क्या क्या ऐड बैक करना है पहले वो देख लेते हैं. नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट, ठीक है, 10, फिर 4, फिर डेप्रीसिएशन तो करना ही है. बिफोर डेप्रिसिएशन एंड amortization बोला है ना, तो 9 and 8. amortization. एक्चुअली अंडरलाइन प्रॉफिट का कैलकुलेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अनयूजुअल एक्टिविटीज रहते हैं अपन उसको ऐड बैक करते हैं. तो डेप्रिसिएशन को भी ऐड बैक करते हैं और अनयूजुअल एक्टिविटीज को भी ऐड बैक किया जाता है. अभी तो अनयूजुअल एक्टिविटीज में क्या क्या थी जो फिर से नहीं होने वाली है नेक्स्ट ईयर. देखना, डेट इशू कॉस्ट में हो सकती है. नहीं, डेट इशू किया ना हमने, तो डेट इशू अपन हर हर साल नहीं करेंगे. इम्पेयरमेंट एक्वायर्ड ऑन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स, इम्पेयरमेंट भी हर साल नहीं होगा. इम्पेयरमेंट प्रोसीड्स भी, ये जो है इम्पेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी कुछ हर साल नहीं होने वाली. शेयर बेस्ड पेमेंट,
ये अपन ने एक्चुअली इससे की हुई है, रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस भी हर साल नहीं होने वाले, तो अपन ये सारे कॉस्ट को अपन ऐड बैक कर सकते हैं, बिकॉज दीज कॉस्ट आर नॉट गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट ईयर, राइट। तो amortization भी कर दिया। अभी इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सेस ऑफ इंश्योरेंस 3। एक्सेस ऑफ इंश्योरेंस ही मैंने डाल दिया सीधा मैंने, मतलब अब वरना मेरे को 10 और -7 ऐसा अलग ये डालना पड़ता, सो आई थॉट ऐसे ही कर देते हैं। डेट इशू अपन हर हर साल नहीं करने वाले। ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट है ना, ये शायद हर साल हो सकता है, तो इसको रहने देते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग, it depends upon the management judgment also whether this restructuring cost, sorry, whether these share based payment costs are going to happen in the future or no. Impairment of property, impairment of acquired intangible assets, impairment of 6 and 8। तो इन सारे कॉस्ट को अपन ऐड बैक कर सकते हैं। वील सी वेदर देयर आर सर्टेन अदर कॉस्ट विच एक्चुअली शुड हैव बीन एडेड, मतलब अदर कॉस्ट में वही आएगा शेयर बेस्ड पेमेंट, अगर वो ऐड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बस वो अपन चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो यार देखो, शेयर बेस्ड पेमेंट जो है वो हर साल अपन करते ही है एंटिटी, सो इट इज नॉट अ अनयूजुअल एक्टिविटी टू डू, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। तो 32 और 60 मुझे अंडरलाइंग प्रॉफिट फिलहाल के लिए मिला है, सो ये अपन ने लिख दिया। और अभी अभी तक अपना वो क्या था, यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ अंडरलाइंग प्रॉफिट। द यूज ऑफ अंडरलाइंग प्रॉफिट कैन हेल्प द एंटिटी and the investors understand that that there were certain costs that were incurred in the current year, which won't happen or which won't be incurred in the upcoming years. Uh, and thus all these items were actually one-off costs, and as these items won't be repeated in the next year, the same performance, the same net profit before taxation after, nahi, the same net profit before taxation won't incur in the next year, or won't be reflected in the next year, मतलब बेसिकली कंपनी का नेक्स्ट ईयर लॉस नहीं होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा। तो शेयर बेस्ड पेमेंट अभी सेम चीज बोलेंगे कि शेयर बेस्ड पेमेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द शेयर बेस्ड पेमेंट, वेदर इट इज गोइंग टू इनकर इन द फ्यूचर और नॉट, whether it is going to incur in the future or not. However, we can see that share-based payments are made in every year, and are not one-off costs, or are not included in the calculation of the underlying profit. उसके बाद हाँ, we can also see that the underlying profit of 2016 is still much lower than the profit from operations of 2015. Thus, questions can be asked to from the investors that whether that why there has been a decrease in the underlying profit, because it seems that there is a problem or a deficiency in the company's operations itself, ये एक पॉइंट बोल सकते हैं। चलो चेक करते हैं। दे है 35 और 61, तो उन्होंने शेयर बेस्ड पेमेंट को भी एक्चुअली यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इट्स ओके, बिकॉज हमने बोला था कि नेचर ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर ये डिपेंड कर जाती है चीज, तो हमने वो एक लाइन बोली हुई, इसके लिए शायद एक एडवांटेज मिल सकता है। बट यू विल रीड व्हाई शेयर बेस्ड पेमेंट आर नॉट ट्रीटेड एज वन ऑफ कॉस्ट। देखो, directors of Rational Company are utilizing a controversial figure for evaluating the company's earnings. Depreciation and amortization are non-cash expenses related to assets which have already been purchased, and they are expenses which are subject to judgment or estimates based on experience and projections. The company may use EBITDA in attempting to show operating cash flow, since non-cash expenses are added back. However, EBITDA can also be misused and manipulated.
It can be argued that because of the estimation of depreciation, amortization, and other non-cash items is vulnerable to judgment error, the profit figure can be distorted. But by focusing on the profits before these elements are deducted, a truer estimation of the cash flow can be given. However, the substitution of EBITDA for conventional profit fails to take into account the need for investment in the fixed capital items. There can be an argument for excluding non-recurring items. There can be an item that there can be an argument for excluding non-recurring items from net profit figure. Therefore, it is understandable that deductions from impairment of property, the insurance recovery, and the debt issue costs are made to arrive at underlying profit. However, IAS 1 presentation of financial statements states an entity shall present additional line items, heading, and subtotal in the statement presenting profit or loss and other comprehensive income when such presentation is relevant to understanding entities financial performance. मतलब इन सारी चीजों को बस लाइन बाय लाइन आइटम्स में डालना चाहिए था, ऐसा बस इन्होंने बोला है in accordance with IAS 1 presentation of financial statements. This paragraph should not be used to justify presentation of underlying profit adjusted the pre-exceptional measures of performance on the face of the profit or loss statement. The measures proposed are entity specific and could obscure performance and poor management. ये देखो शेयर बेस्ड कंपेंसेशन, ये देखो शेयर बेस्ड कंपेंसेशन may not represent cash, but if an entity chooses to pay equity to employees, that affects the value of equity no matter what form that payment is in, and therefore is it should be charged as employee compensation. Okay, I understand why they have done this, because share based payment हम जो करते हैं वो हमारे जजमेंट के ऊपर रहता है कि हमको एम्प्लॉय को कितना पैसे देने हैं। Whereas what we thought was कि डिविडेंड तो हर साल देना ही पड़ता है, या जो एम्प्लॉय को भी अपन पैसे देते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, वो अपने को हर हर साल तो देने ही पड़ते हैं। तो वो हर साल देने पड़ते हैं, लेकिन कितने देने हैं उसके ऊपर मतलब मैनेजमेंट का वो जजमेंट इन्वॉल्व है, इसके लिए उसको एड बैक किया गया है। इट इज एन आउटले इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, देयर इज देयरफॉर little justification in excluding this expense from net profit. Restructuring costs are a feature of an entity's business, and they can be volatile. They should not be excluded from the net profit because they are part of the corporate life. Severance costs and legal fees are not non-cash items. Impairments of acquired intangible assets usually reflect a weaker outlook for acquired business than was expected at the time of acquisition. Actually, अपन impairment के लिए ये भी बोल सकते हैं कि if there are impairment charges in the statement of profit or loss, then that means that the management judgment was very poor when it came to recognizing the asset at the first place. It appears as though Rationale wishes to disguise a weak performance in 2016 by adding back series of expense items. तो ये अपन ने बोला था कि ऊपर से कॉपी पेस्ट किया गया पॉइंट है, अपन ने जो बोले थे पहले उसमें से। EBITDA, although reduced significantly from 2015, is now a positive figure, and there is an underlying profit created as opposed to loss. However, users will still be faced with significant decline in profit, whichever measure is disclosed by rational company. तो यही मैं अपन ने बोला कि फिर भी जो अंडरलाइंग प्रॉफिट है वो फिर भी 35 ही है एज कम्पेयर टू 61 ऑफ द लास्ट ईयर. The logic of increasing profit is flawed in many cases, but there is lack of authoritative guidance in this area. Many companies adopt non-financial measures without articulating the relationship between the measure and the financial statements. तो इम्पेयरमेंट के लिए क्या था कि एक तो मैनेजमेंट का जजमेंट ही खराब था, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आर वॉलेटाइल, दे शुड नॉट बी एक्सक्लूड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। देखो हमको नहीं उसको एक्सक्लूड करना चाहिए नेट प्रॉफिट फिगर में से जो हमने किया है अंडरलाइन प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, बिकॉज ये कॉर्पोरेट लाइफ का पार्ट ही है रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब इन्होंने यहाँ पे नीचे इसका एक पैराग्राफ दिया हुआ था। The directors of Rationale are confused over the nature of reclassification adjustment and understand that board has recently revised conceptual framework to cover this issue.
Discuss with examples and reference to conceptual framework the nature of reclassification adjustment. The reclassification adjustment refers to that when the assets were initially recorded in the previous place to other comprehensive income, they were parked there for a temporary period of time, but now, upon the disposal of the asset, are now being reclassified, or actually on the disposal or derecognition of the asset or liability are now reclassified to profit and loss. This reclassification is only possible if it has been stated that profit and loss will provide a much more fairer presentation than compared with the other comprehensive than when presented in the other comprehensive income. This is where conceptual framework comes into place, wherein there are the concepts of relevance and faithful representation. Uh, faithful representation. फिर रेलेवेंस क्या होता है वो बता देंगे, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो बता देंगे। उसके बाद रेलेवेंस इज relevance relevance is that the information is relevant in the financial statements if the information is material in nature, and faithful representation में वही कि free from error, complete, neutral, वो सब बता देंगे। अच्छा, ऐसे हमको एग्जांपल्स भी देने हैं ना। There are certain items which can never be reclassified to profit or loss from other comprehensive income. They are the revaluation surplus which is earned uh, through IS 16 property, plant and equipment, and the remeasurement component from the employee benefits, IS 19 employee benefits। इंडिया कुछ कभी नहीं जाती। जो जो जाती है वो क्या है कि the exchange gain or loss that has been recorded in OCI will can be reclassified to profit and loss when the foreign operations are disposed of, वो जा सकते हैं, है ना। ये वाला बता देंगे। एंड डिस्कस द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अलाउिंग reclassification of items from other comprehensive income. Arguments against reclassification of items from other comprehensive income are one key. It is a complex treatment to understand, and for the investors, and certain investors might not understand why the items are reclassified back to profit and loss when they were first recorded in the OCI at the first place. उसके बाद चेक कर लेते हैं। Reclassification adjustments are amount recorded in the profit and loss in the current period, which were recognized in OCI in the current or previous periods. अपने same बोला, according to a conceptual framework, income and expenditure included in the other comprehensive income should be reclassified to profit and loss. When doing so, results in profit and loss, providing more relevant information. However, when developing or revising IFRS standard, the board may decide that reclassification is not appropriate if there is no clear basis ऑफ आइडेंटिफाइंग द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ रिक्लासिफिकेशन। मतलब अगर हम लोग अमाउंट और टाइमिंग को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते अपॉन रिक्लासिफिकेशन, तो फिर वो चीजें रिक्लासिफाई नहीं होनी चाहिए इन प्रॉफिट एंड लॉस। Examples of items recognized in OCI which may be reclassified to profit and loss are foreign currency gains on disposal of a foreign operation and realized gains or losses on cash flow hedges. Items which are not reclassified include changes in revaluation surplus under IAS 16 property, plant and equipment, and remeasurement gains or losses on defined benefit plan under IAS 19 employee benefits। तो अपन ने भी ये सेम चीज बोली। आगे बढ़ते हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिक्लासिफिकेशन में देखते हैं क्या बोलते हैं। Those against reclassification believe that it adds complexity to the financial reporting because it is not fully understood by the user groups. It also argued that reclassification adjustment do not meet the definition of income or expenses in the conceptual framework because the changes in the asset or liability may have occurred in the previous period. The lack of consistent basis in 2010
conceptual framework for determining how items should be presented has led to an inconsistent use of OCI across IFRS standard. मतलब एक lack of consistent basis के वजह से हम लोग ने इनकंसिस्टेंटली ओसीआई को यूज किया है, क्योंकि हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाए कि कौन से आइटम जानी चाहिए, कौन से आइटम नहीं जाने चाहिए. Opinions vary, but there is a feeling that OCI has become a place where board decide to put controversial gains or losses. Many users are thought to ignore OCI as changes reported in are not caused by recurring trade activities and therefore irrelevant to predicting future performance. Okay, तो OCI एक जगह बन चुकी है कंट्रोवर्शियल गेम्स और लॉसेस को डालने के लिए, और बहुत सारे यूजर्स तो ओसीआई को देखते भी नहीं है, बिकॉज जो नॉन रिकरिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है वो ओसीआई में जाती है, जैसे कि रिवैल्यूएशन सरप्लस. अब ये कोई चीज हर साल होने वाली तो है नहीं, इसलिए ये लोग इस चीज को ओसीआई में डाल देते हैं, ऐसा.